Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain you homophones words. So firstly we should know what are homophones. Homophones are those words which sound is similar which sound means which pronunciation are similar but have different meaning. But meaning is different. Those words are called homophones and those words are called homophones and confusable words also we can call those words and look at these examples 1 to 10. First number is written advice. Advice means होता है सलाह देना एंड ADVISE एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना. दोनों का मतलब सेम है बट इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो एडवाइस है ADVICE एडवाइस का मतलब होता है ये नाउन को डिनोट करता है. मीन्स व्हेन यू विल यूज दिस एडवाइस इन अ सेंटेंस यू हैव टू यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन. मीन्स नाउन के प्लेस पे यूज करना है इसे. एंड एडवाइस ADVISE एडवाइस ये डिनोट करता है वर्ब को, तो इसको हमें वर्ब के मीन्स नाउन के बाद आएगा ये. फॉर एग्जाम्पल सी एडवाइज्ड मी टू स्टडी वेल. सी एडवाइज्ड मी टू go to park. And if I am using advice ADVICE, so we can say my advice is good. My advice is good. And my father gives me advice. So these advice and advice both are same, but CE meaning denote you noun and ADVISE denote verb. Next part is your allowed. Allowed ALOUD allowed means होता है loudly means जोर से बोलना. एंड ALLOWED allowed means होता है परमिट करना, किसी को आज्ञा देना. सो वी कैन यूज सेंटेंसेस प्लीज स्पीक अलाउड. अलाउड नेक्स्ट नंबर अलाउड वी कैन टेक एग्जाम्पल my teacher allowed me to go to there. And next number is yours birth. BIRTH बर्थ मीन्स होता है जन्म एंड BERTH बर्थ मीन्स होता है ट्रेन की बर्थ. ट्रेन का एक जो सीट होती है वो लॉन्ग वाली उसको बोलते हैं बर्थ. एंड BIRTH बर्थ का यूज हम लोग कर सकते हैं. माई बर्थ डेट इज डैश डैश वॉट एवर योर बर्थ डेज यू कैन राइट. एंड योर बर्थ प्लेस इज Delhi. And next number birth. I didn't get birth on the train. My birth is so small. And break next part is your break. break means होता है तोड़ना. break means तोड़ना. and BRAKE ब्रेक ये डिनोट करते हैं हमें साइकिल्स के ब्रेक, कार के ब्रेक्स मीन्स जो हम यूज करते हैं ड्राइविंग अ व्हीकल. अगर व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं. सो ब्रेक एग्जाम्पल यू कैन सी डोंट ब्रेक द स्केल, डोंट ब्रेक द बॉटल, डोंट ब्रेक द विंडो. so many examples here are. and BRAKE ब्रेक मीन्स व्हीकल्स के ब्रेक. द ब्रेक ऑफ द कार इज आउट ऑफ ऑर्डर. you should always take care of brakes. And next part is diary. so diary means every day you have to bring your diary daily. and you can note it down anything. if you have if you have a diary you can note it down anything. If you note it down anything when you like something
And next part is dairy. So dairy means dairy product. And next is yours deer. Deer means loving, and deer, deer means it's a animal. It's your animal. So a deer is very graceful. deer, deer means very graceful. And dear, dear, my dear, all my dear friends came to my birthday party. And next part is dye. Dye means dying, death, denote death. And dye denote color dye, denote a color dye. So die, dye means dye, we can use sentence, give me smoking or you will soon die. Dye, he bought an expensive dye to color his hairs. Next is yours weather. Weather means season, mausam. And weather, second weather is meaning is if. I don't know whether he will pass. And first weather is meaning yesterday the weather was cloudy. Next wait, next number is wait. Wait means इंतजार करना. And WEIGST wait means होता है बाहर. So wait, I will wait you, I'll wait for you. Wait. Next part is wait, WEIGST wait. Wait means बाहर से related है. So my friend's weight is 75 kg. Yeah, my friend's weight is 25 kg. नेक्स्ट इज योर्स वीक. वीक मीन्स होता है कमज़ोर. एंड WEE के वीक मीन्स होता है सप्ताह. देयर आर 7 days इन अ वीक. एंड WEA के वीक यू कैन मेक सेंटेंस ही इज़ अ वेरी वीक person. Okay, so meaning I have explained, so you can make sentences in your any notebook or any rough notebook. So if you are doing daily 1 or 2 sentences, you can improve your vocabulary power. So do practice and take care. Till my next video, bye bye to all of you.